Hello everyone. Let's start with the revision of the previous class. Okay. So we had seen that. I'll come from here. I'll start from here. Okay. We had seen that offer was what? Offer do cheez tha. Okay. It was expression of willingness as well as view to obtain assent. Okay. Assent means approval. Okay. So according to section 2A, offer means expression of willingness along with a view to obtain assent of the another person. So we had seen an example of that Ramesh was proposing to Priya. Okay, he said, I want to marry you. And he also said that he asked whether she has an intention to marry him. Will you marry me? He asked, right? So that was an example for offer. Okay, offer can be to do or to abstain. Okay, the expression of willingness can be for doing something or for not doing something. Okay, so for example, the negative example for the negative offer example was out of court settlement. Okay, out of court settlement was an example for negative offer. Next, we saw that when offer is combined with acceptance. Okay, offer is combined with acceptance. Acceptance is what? Acceptance is nothing but agreeing. Okay, agreeing to the offer. Okay, so when offer is combined with acceptance, it becomes promise. Okay, so as per section 2B, promise was defined as offer along with acceptance. Okay, next, when this promise is considered along with consideration, it becomes an agreement. Okay, according to section 2E, agreement is nothing but a promise with consideration. Okay, what is consideration? It is quid pro quo. Okay, एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना. Okay, that was that, right? Then, uh, then what was agreement along with enforceability by law? It becomes contract. Okay, agreement along with enforceability by law, it becomes contract. Okay, so for all the other examples are enforceable by law. One negative example, like which is not a contract, would be smuggling of goods. Okay, if there is an offer, okay, by one person, and also there is an acceptance by another person, also there is consideration for both of them in the contract, but in that agreement, but if there is no legal enforceability, then it will not be a contract. For example, this smuggling of goods. Okay, if there is offer, acceptance, consideration for this smuggling of goods, still it is not legally enforceable because it cannot be upheld in the court of law. Okay, this was step 1 was offer, step 2 was acceptance, step 3 was consideration. All three together along with enforceability would make a contract. Okay, that was definition of contract. Okay, then we learned all about offer yesterday. So what were the types of offers that we saw yesterday? One was general offer. Can you recall? Like general offer was something which could be accepted by anyone at any time. Okay, that example was Mrs. Carlyle versus Carbolic Smokeball Company, where that smokeball company had given an ad in the newspaper relating their product, and then Carlyle had used that product, and still she had contracted that influenza. So that was that case law. Okay, I hope you remember. Then there is specific offer. This is another type of offer, which is specific offer. Okay, where I said Ramesh and Suresh. Okay, this example I had given you. Okay, Ramesh had given an offer to sell his house for a discounted price because based on their friendship and all that. Okay, so he had offered some 1 crore for his, for selling his house. Okay, then there was one person Chalu standing beside them. वो आके ना बोल दिया कि मुझे अच्छा ये ऑफर पसंद आ गया. Okay, I will buy the house from you, Ramesh. He'll say. Okay, but this is not valid because specific offer can be accepted by specific person only. So only Suresh can accept this offer. Okay, this Chalu cannot do anything, right? Yes, that was specific offer example. Then there was cross offer. Cross offer is a offer which is, it is a set of two identical offers, okay, which are not known. Like, the people making the offers, they don't know about each other's offer. Okay, I had given that example of that WhatsApp and email. Okay, तो रमेश ने एक WhatsApp भेजा था. Okay,
Then this Suresh was sleeping by that time, and then Suresh woke up and came back to Ramesh and he gave a similar email. Okay, या फिर face to face he said the same offer. Okay, so these two different set of offers, okay, they do not make a contract. Okay, because there were only offers. Okay, यहाँ से भी offer जा रहा था, यहाँ से भी offer जा रहा था. Okay, there is no acceptance. There is no acceptance, hence there is no contract. Okay, then next was counter offer. Okay, when you go to a shopping, okay, कहीं पर shopping जाते हैं तो what shopkeeper says like 100 rupees का ये shirt मिल जाएगा, then you'll never buy it for 100 rupees, right? You'll first bargain with the shopkeeper, right? So whatever counter you give, counter offer you give, that is not acceptance. Okay, counter offer, counter price, whatever we offer to the shopkeeper, वो of acceptance नहीं है. Okay, so there is no acceptance, hence no contract again. Okay, so this is not an offer. See the title is types of offer. Okay, so हम हमें लगता है कि ये types of offer है, लेकिन ये दो ही types of offer है, right? These are not offers only, like these are offers, but there is no contract in this. Okay, there is no contract in this. Okay, then there is standing or continuous offer. Okay, standing or continuous offer, this one Carlyle versus carbolic smoke ball also can be considered as an example for standing offer, where the offer is open for a particular period of time. Within that time anybody can accept that offer. Okay, so quick example tha. Then there was other examples like tenders and all that were examples for standing offers. Okay, then next we saw essentials of a valid offer. What has to be there in the offer so that it is legally valid? One thing was that legal relationship should be there. The intention of that offer should be to create a legal relationship, right? So if example was that birthday party invitation, right? Ramesh ने सुरेश को बुलाया था, सुरेश को कुछ काम आ गया तो वो नहीं जाएगा बर्थडे पार्टी में, तो रमेश कैनॉट सू हिम. ओके, दे कैनॉट गो इनटू कोर्ट एंड एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट सेइंग दैट ये मैंने इनविटेशन दिया था, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था एंड ऑल दैट. दे कैनॉट आर्ग्यू इन कोर्ट, राइट? सो ऐसे तो मतलब कोर्ट का काम खत्म ही नहीं होगा कभी, right? So there was no legal obligation in this case, only there was social obligation, hence it was not a valid contract, or offer itself was not valid. Okay, then we saw that offer cannot be vague. Okay, it cannot be vague, it has to be certain, it has to be certain. For example, Ramesh will offer Suresh that he will sell him 100 tons of oil. Okay, so which oil and all that is not mentioned in the offer, so it is vague. So the offer itself is not valid. Even though Suresh will accept this offer, it is not a valid contract. Okay, so suppose in the same case Ramesh was a mustard oil dealer. Okay, so this was the example, right? So mustard oil dealer, then obviously it is common sense that he will be offering to sell that mustard oil itself, right? So that is why it will become a valid contract in case of mustard oil dealer. Okay, only if he is dealing only in mustard oil, then only it will be valid. Okay, then next was it has to be communicated. Okay, offer has to be communicated for the other person to accept it. If it is not communicated, if the offer is not known to the acceptor, he cannot accept it, right? We saw that case law of Gauri Dutt and Lalman. Okay, where that Gauri Dutt ka nephew kho gaya tha, right? Then what happened? He sent his servant Lalman to find him, right? This, and then later Gauri Dutt announced a reward. ओके, रिवार्ड अनाउंस कर लिया था उसने कि कोई भी उसके नेफ्यू को ढूंढ के ले आएगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, कैश रिवॉर्ड मिलेगा. But Lalman didn't know this. Okay, even before knowing that, he brought his nephew back. Okay, later only he came to know that there was a reward. Okay, then he asked Gauri Dutt for the reward. Then Gauri Dutt said this reward was not communicated to you, this was not an offer to you. Okay, so this is not your this was not a offer for you, so there is no contract. And in the court also it was upheld that Lalman was wrong to ask for the reward. Okay, because he didn't know about the offer before he acted upon it, right? Then
Yes, this we already saw in the offer definition itself. It should be made, offer should be made with a view to obtain assent of the other person. So, I wish to marry you is not a valid offer. Okay. If it is accompanied along with, will you marry me? ऐसा वाला sentence हम add कर देंगे, only then it will be a valid offer. Okay. Then, offer may be conditional. Okay. Sometimes what happens in, we go in auto rickshaws and all that. वो बोलते हैं, भैया बोलते हैं यूपीआई नहीं चलेगा, मैम मुझे कैश चाहिए. ओके. तो उनका ना क्या है कि दे पेमेंट टर्म्स. ओके, दिस कैन बी कॉल्ड एज पेमेंट टर्म्स. Okay, things like this can be inserted in the offer. Okay, offer doesn't become invalid just because it is a you know conditional, right? Offer can be conditional, it is still valid even though it is conditional. Okay, so it is up to the acceptor whether he wants to accept the terms or not. Okay, that is another case, but the offer itself is not invalid for having conditions. Okay, then यस. सो ऑफर में ये नहीं लिखना चाहिए कि अगर तुम चुप रहोगे. ओके, साइलेंस. ओके, फॉर 5 days इफ यू डोंट रिप्लाई, नो रेस्पॉन्स फ्रॉम यू, आई विल टेक इट एज एक्सेप्टेड. ऐसा कुछ ऑफर में लिखना नहीं चाहिए. ओके, अगर कुछ ऐसा है तो वो ऑफर ही इनवैलिड हो जाएगा. ओके. Yes, for example, we had taken that iPhone वाला example, right? रमेश ने सुरेश को बोला कि मैसेज भेज दिया कि आई विल बाय योर आईफोन फॉर 50,000 रुपीज. ओके, इफ यू डोंट रिप्लाई इन 1 week, आई विल ट्रीट इट एज एक्सेप्टेंस. ओके, ऐसा इसने रमेश ने लिख दिया. ओके, सो दैट ऑफर इटसेल्फ इज नॉट वैलिड. Okay, then offer may be general or specific. We discussed this in the types of offers also. Same thing. Then offer can be express or implied. Okay, even though it is express or implied, both the cases it is valid offer. Okay, so express offer is all these expressions of words. Okay, words में हम बोल दिया होगा offer को. Okay, so what was that, like रमेश ने प्रिया को propose किया था, वो वाला example. And then any other example, like Ramesh Suresh ko chocolate बेचता है 5 star. Okay, all those are express offers, right? They're expressed using words. Okay, it might be a written one, okay, or a oral one. Okay, oral offer or written offer. Okay, it might be written or oral. Email भी हो सकता है, या फिर face to face हो सकता है, या फिर call में बता दिया. Okay, so offer can be expressed using words, either written or oral form. Okay, then it can be implied also. Okay, I had given you an example of bus at bus stop, right? एक बस आके बस स्टॉप पे खड़ा होता है, इसका मतलब क्या है? It is offering the passengers to take them to their destination, right? After payment of the टिकट का जो भी पैसा है वो पे करने के बाद they'll take you, right? So that is an implied offer. Okay, they are not expressing in words anything, just by their conduct. Okay, just by the bus, when the bus stops at the bus stop, it is conveyed. Okay, it is understood that it is waiting for the passengers. Okay, then हमने ये भी देखा था कि ऑफर क्या नहीं है. Okay, what is not an offer? Okay, for example, it was one was statement or announcement. Okay, like father का जो भी wish था, father wrote a letter. Okay, this example we had discussed. Okay, उसने एक letter लिख लिया अपने बेटे को कि I wish that my son becomes the owner of all my property. Okay, so this is just a wish. Okay, there is no offer here, right? Then there is a scholarship ka announcement. Okay, this is also not an offer. Okay, then we had seen that Harvey versus Facey wala case law. Okay, where Harvey had asked Facey, okay, like whether they'll sell their bumper hall pens to them, and then what is the price of that, right? They had asked 2 questions, but Facey had replied to only one question. Okay, they had replied with a price. Okay, price कितना है करके उन्होंने बता दिया, लेकिन उनको इंटेंशन है कि सेल करने का नहीं है, दैट दे हैड नॉट मेंशन. Okay, they had just merely answered to a question, so it is not an offer. So Harvey cannot accept the that whatever answer was there as an offer, and then they cannot say that there is a contract. तो उनका क्या हो गया था, उनका स्टैंड गलत कहला गया कोर्ट में. Okay, then some agents give you price list, then all those things are not offer. Okay, then we saw that invitation to offer is also not an offer. Okay, we saw that invitation to offer was what, वो पहले बनाया जाता है. ऑफर ऑफर पहले आता है.
sorry, this sequence is wrong. 1 second. Okay. Okay. Invitation to offer पहले आता है, then offer उसके बाद में आता है. Okay. So we had discussed an example for this. Okay. Auction suppose. Okay. Auction होता है तो किसी चीज का auction चलता रहता है. Okay. Then the bids are made, right? These bids are actually, this auction is what? Auction is an invitation to offer. These bids are actually the offers. Okay, this is an invitation. Auctioneer वो खड़ा रह के क्या बोलता है? Okay, this thing is to be sold for so much and so much, for 10 lakh. Then you give us your bids. Okay, so it is quoted at 10 lakh, you give us your bids, the highest bidder will win. Okay, that is what the auctioneer will say, right? तो auctioneer जो कर रहा है, that is invitation to offer. Whatever the bids are given, okay, if the bids are given and then the auctioneer accepts it. ओके, एक्सेप्ट कैसे करेगा वो? फॉल ऑफ द हैमर से. ओके, हैमर के फॉल से एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट? तो एक्सेप्ट होने के बाद देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? ओके, बट ऑक्शन वाज व्हाट? ऑक्शन वाज एन इनविटेशन टू ऑफर. ओके, सो व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ इनविटेशन टू ऑफर? टू गेट मोर ऑफर्स, right? Then what is the intention of making an offer? It is to obtain the assent of the other person, right? It is directly an offer. Okay, then what are the other examples for invitation to offer? एक prospectus होता है company का, that we also discussed yesterday. Then price list also is a invitation to offer. Then display of goods in shop. All these are invitations to offer. Okay, so these are all the ways by which offer can be made. By act, by absistence. Absistence का मतलब क्या होता है? Not doing. Okay, it is not doing. Okay, negative वाला. Okay, so for example, not doing competing business. Okay, this is an example. Then by act, how they can express the offer? By words and also by conduct. Conduct का मतलब वो implied वाला offer था जो जिसमें हमने बस का example देखा था, right? Then by words, how can they do? They can do using a written agreement or written offer or a oral offer they can do. But what happens in oral offer? There is no evidence of that offer, right? So it is not so recommended. It is always recommended to have a written offer. Okay. Then there is another topic in offer. Offer का सब कुछ हमने पढ़ लिया था. एक दो रह गए. Okay, we'll cover that today. Okay. So what was that? Communication of offer. Okay. So when is the communication completed? Okay, so we will see an example. Okay, तो ये A है, Mr. A. Okay, and this guy is Mr. B. Okay, ग्रीन शर्ट वाला जो है वो मिस्टर बी है. ओके, मिस्टर ए ने क्या किया? 10 मार्च को उसने एक लेटर पोस्ट कर दिया ऑफर का. ओके, सम ऑफर ही हैज मेंशन्ड. ओके, आई विश टू सेल गुड्स टू यू. वो कुछ तो गुड्स था. ओके, सम गुड्स. ओके, ₹10 लाख के लिए. ओके, डू यू वांट टू बाय करके उसने लिख लिया. ओके, देन दिस लेटर. ओके, सपोज वो लेटर उसके पास आ गया 12 मार्च को. ओके, 12th मार्च दैट मिस्टर बी रिसीव्ड द लेटर. देन व्हाट हैपेंस? एंड ऑल्सो ही ओपन्स द लेटर एंड ऑल्सो ही रीड्स द लेटर. बी ने क्या कर दिया? लेटर को ओपन करके पढ़ लिया. ओके, देन इट इज सेड दैट ऑफर इज कम्युनिकेटेड ऑन 12th मार्च इटसेल्फ. ओके, सो इसको बी को, किसको ऑफर करना था? ए ने ऑफर किया बी को. ओके, किसको ऑफर पढ़ना है? बी को. मतलब बी को तब तक ये नहीं पता चलेगा कि ऑफर है. ओके, व्हाट इज द ऑफर? अनलेस ही कम्स टू नो ऑफ दैट, the communication is not said to be complete. Okay, so what is the text we will read? Okay, section 4 के हिसाब से what they say, the communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Okay, in the same example, what happens if the letter is posted on 10th March, it reaches on 12th March, but उसने पढ़ा ही नहीं, मतलब उसने इग्नोर कर दिया उस दिन. Okay, बाद में उसको कभी तो याद आया तो 15th मार्च को उसने वो पढ़ा. ओके, 15th मार्च को उसने वो ऑफर पढ़ा. ओके, तो बी केम टू नो अबाउट द ऑफर ऑन विच डेट? 15th मार्च. ओके, व्हेन डिड द लेटर रीच हिम? 12th मार्च. कैन यू टेल मी when is the communication said to be complete?
It is 15th March. Okay, 15th March, because when B comes to know of that offer, only then the communication of offer is complete. Okay, same example is there. Okay. Yes, one or two things are left in case of offer. अभी हम क्या करते हैं? Now we will start with acceptance. Okay, we'll start with acceptance today. So अभी अभी जाके नया टॉपिक शुरू हुआ है. Okay, all this time what we were doing, revision we were doing. Okay, acceptance. Okay, acceptance थोड़ा रफ में मैंने बता दिया कि it is nothing but approval or agreeing ऐसा कुछ. Okay, so we'll read why acceptance is very important. Okay, how it affects the validity of contract and all that we will see. Okay, तो imagine a train. ठीक है, एक ट्रेन है. ओके, दिख रहा है आपको ट्रेन? ओके, इसमें पूरा गन पाउडर भरा हुआ है. ओके, दिस इज ऑल गन पाउडर. ओके, so this gunpowder with a train, along with a train, this is what? This is offer. Okay, this is nothing but offer. अगर ये चल रहा है ऐसे खुद, this train is just going on. Okay, like this. Is there any danger? Is there any harm? No. Okay, there is nothing. There is nothing happening. The train is just carrying the gunpowder. वो यहाँ से लेकर वहां तक लेके जा रहा है. Imagine that it is lighted with a matchbox. Okay, this train is lighted with a matchbox. Then what will happen? Boom. Explosion हो जाएगा, right? So acceptance is like the matchstick. Okay, acceptance is like matchstick. अगर offer खुद से है, okay, offer stand alone में कुछ भी नहीं कर सकता है. Okay, once it gets acceptance from the other side, okay, then it becomes legally binding. Okay, फिर वापस नहीं जा सकते, फिर कैंसिल नहीं कर सकते. Okay, so the other person with both the people in the contract should be, they'll be bound by it. Okay, legally they'll be bound by it, and someone who does not do their part in the contract, then the other person can sue them in the court. Okay, when I'm talking about all this, you think that consideration है यहाँ पर. Okay, consideration है. Okay, consideration भी एक पूरा अपने आप में एक टॉपिक है. वी विल डिस्कस दैट इन डेप्थ. बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग दैट ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, यू हैव टू थिंक दैट बाय डिफॉल्ट कंसिडरेशन है. ओके, कंसिडरेशन है यहाँ पर. ओके, सो दैट इज हाउ acceptance is so important. Okay, when offer is alone, it cannot affect at all, but when it is accompanied with acceptance, it becomes explosive. Okay, it becomes once. Okay, so let's read this. Okay, as per section 2B of the act, term acceptance is defined as when the person to whom the proposal is made, जिसको भी proposal मिला था. Okay, there is Ramesh, there is Suresh. Okay, Ramesh told, I will sell you this 5-star for 10 rupees, will you buy? Then Suresh said, okay, Suresh is the person to whom this proposal is made, right? Then Suresh will say yes. Okay, he will agree. Okay, he will give his approval. Okay, is made signifies his assent thereto. Okay, then what happens? Proposal is said to be accepted. Okay, proposal क्या हो जाएगा अभी? Offer will be accepted या फिर proposal will be accepted. When the proposal is accepted, it becomes a promise. We have already seen that promise का definition में क्या लिखा हुआ था कि it is offer plus acceptance. Okay, offer plus acceptance is promise. Okay, okay, this train wala this one, this is not of my own idea. Sir William Anson had told like this. Okay, so he had said that acceptance is to offer what a lighted match is to a train of gunpowder. Okay, ऐसा उन्होंने बोला था. Okay, तो ऑफर अपने आप में कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं रखता है, right? It can be taken back before acceptance. We'll also see this. When can a offer be taken back? All that we will see in detail. Okay, मतलब ये ट्रेन जो है उसको वापस ऐसे ही जा सकता है वो, राइट? एक जगह से एक जगह वो विदाउट एनी हार्म इट कैन गो. Once it is lighted by match, then there will be
explosion. Nobody can stop that. It is too late to stop. Okay, once it is accepted, it becomes contract and it is legally enforceable. And then they cannot say that रमेश या फिर सुरेश, जैसे हमारे एग्जाम्पल में वो नहीं बोल सकता कि रमेश नहीं बोल सकता कि आई विल नॉट सेल यू ओके 5 स्टार, देन सुरेश कैनॉट से दैट आई विल नॉट गिव यू 10 रुपीज. ऐसा कोई भी ऐसा करेगा ना तो देन दे विल हैव टू फेस देयर लीगल consequence. Okay, then as we saw what are the लीगल रूल्स या फिर वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या होना जरूरी है, सेम थिंग वी विल सी विथ एक्सेप्टेंस ऑल्सो. ओके, व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस. ओके, तो हमने देखा था कि देर वर 2 टाइप्स ऑफ ऑफर्स, वन वॉज स्पेसिफिक एंड वन वॉज जनरल ऑफर. ओके, specific offer can be only accepted by such specific person. We have already seen this. Okay, one example also I had told you of Chalu, right? Then general offer is whoever has the knowledge of the offer, they can accept it. Okay, why we are reading it again? Because acceptance point of view se dekh rahe hain, and then acceptance can be given only by person to whom offer is made. Okay, so offer and acceptance are related. Okay, some points they seem to be repeated, लेकिन ये acceptance के point of view से we are saying. Okay, so what are the case laws? Okay, one case law we'll see here. Okay, एक general offer का हमने देखा था, Mrs. Carlyle versus Smokeball Company का. Okay, so that is the same example here also. And one more example of Bolton versus Jones we will see for specific offer. Okay, so यहाँ पर क्या हो गया था कि Jones and Brocklehurst. Okay, these are 2 companies. Okay, Jones and Brocklehurst, they both had a business dealing. These 2 companies had a business dealing. They had signed a contract between them. Okay, J and B, Jones and Brocklehurst. One day what happened before this, before this contract was performed, okay, Brocklehurst का क्या हो गया, कंपनी का नाम चेंज हो गया, इनका कुछ मर्जर हो गया, रिकंस्ट्रक्शन, समथिंग हैपेंड. Okay, then they changed to Bolton. Okay, Brocklehurst say, see, Jones and Brocklehurst had a, okay, bro, I'll say bro. Okay, Jones and bro का क्या था, डील था. Okay, bro ने अपना नाम बदल के क्या रख दिया, बाल्टी, बोल्टन. Okay, कुछ तो रख दिया, बोल्टन. Okay, then इसको जोन्स को तो पता ही नहीं था. Okay, जोन्स को कुछ भी पता नहीं था. Okay, he did not know anything. Okay, फिर क्या हो गया, इसने ना गुड्स भेज दिया. Okay, as per the contract. Okay, as per the contract, Jones sent goods to Brocklehurst. Okay, Brocklehurst को भेज दिया. Okay, then लेकिन अभी किसके पास आ गया गुड्स, वो तो Brocklehurst रहा नहीं, right? Bolton received the order. Okay, then no this Jones sent a order. Okay, उसने purchase order भेजा. Okay, purchase order या फिर invoice. Okay, something purchase order भेजा. Then Bolton was the Brocklehurst को बेचा था, उसने भेजा था. Okay, ब्रो को भेजा था, ब्रो गुड्स भेज दो ऐसा करके. ओके, सेंड द गुड्स लाइक दैट ही सेड. जोन्स सेड टू ब्रॉकलहर्स्ट, ओके, ही सेंट अ परचेज ऑर्डर सेइंग दैट ये सारे गुड्स हमको भेज दो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, देन व्हाट हैपेंड, हु रिसीव्ड द परचेज ऑर्डर नाउ, देयर वाज नो ब्रॉकलहर्स्ट एनीमोर, बोल्टन रिसीव्ड द ऑर्डर. ओके, एंड देन इसने भेज दिया डिलीवरी. ओके, गुड्स भर के यहाँ पर. ओके, ही सेंट इट टू जोन्स. Okay, then when he saw that Jones came to know that these goods are sent by Bolton and not Bro. Okay, उसका मतलब इसको अच्छा ये समझ में आ गया उसको. अच्छा, बोल्टन ने नहीं भेजा है, सॉरी, बोल्टन ने भेजा है, नॉट ब्रॉकलहर्स्ट. ओके, he came to know that. Okay, then what happened, he said I will not pay for the goods. Okay, he said I will not pay for the goods. Okay, then this is बोल्टन. ओके, ये बोल्टन कंपनी का है. ओके, बोल्टन कंपनी का ये डायरेक्टर है. दिस इज ही बिकेम वेरी सैड. ओके, आई वांट द मनी ही सेड. ओके, पैसा चाहिए. ओके, तो देन दे वेंट टू कोर्ट. ओके, दे बोथ आर्ग्यूड. ओके, तो इसने बोला, ओके, जोन्स ने बोला, हु आर यू. ओके, आई हैड तो कॉन्ट्रैक्ट डन विथ ब्रोकलहर्स्ट. ओके, मेरा ब्रो था, राइट. व्हाट आर यू, हु आर यू, ही आस्क्ड, राइट. तो उनका झगड़ा हो गया, तो वो चले गए कोर्ट. ओके, देन हु विंस इन द कोर्ट, जोन्स विंस द कोर्ट, विंस इन द कोर्ट. ओके, so why Jones will win the case? Okay, why did he win the case? Because Jones ने किया था डील ब्रोकलहर्स्ट से.
Okay, so it was a specific offer and specific acceptance kind of, right? So specifically that offer was for Brocklehurst. Okay, so Brocklehurst had a deal with Jones, not the Bolton company. Okay, so that is why the court said that there was no offer between Bolton and Jones. Okay, therefore there was no contract. Contract offer ही नहीं है तो contract कहाँ से आएगा? Okay, that was the case law of Jones and Bolton. Okay, then next thing is acceptance must be absolute and unqualified. Unqualified का मतलब है unconditional. Okay, it should not have any conditions. So just now we saw that offer can be conditional. ओके लेकिन एक्सेप्टेंस कैन नेवर बी कंडीशनल. ओके मतलब ऑफर जो दे रहा है उसका मन है, वो खुद अपनी मर्जी से वॉट एवर ऑफर ही वांट्स ही कैन गिव. ओके द एक्सेप्टर हैज टू एक्सेप्ट इट एज इट इज. ओके मतलब वो अगर कंडीशन बोल देगा तो व्हाट इट विल बिकम. ऑफर में हमने पढ़ा था दिस इज वन टाइप ऑफ ऑफर. व्हेन यू मेक एन ऑफर, ओके व्हेन समवन मेक्स एन ऑफर विल मेक अनदर विल से दैट एक कंडीशन लगा के वी विल एक्सेप्ट द ऑफर ऐसा बोलेंगे. ओके दैट एग्जाम्पल वॉज दैट शॉपकीपर वाला, राइट? तो माँ के साथ शॉपिंग गए थे तो उन्होंने बोल दिया कि 1,000 रुपए में ये शर्ट मिलेगा, ड्रेस मिलेगा या शर्ट मिलेगा कुछ भी, राइट? देन व्हाट माँ विल से, मॉम विल से, मम्मा विल से 1,000 रुपए तो नहीं चलेगा, 500 में ले लेंगे. ओके सो दिस इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस और it is called as counter offer also. Okay so this is not valid. Okay this is not a valid acceptance. Okay maybe this offer is valid. Okay ये वाला ऑफर जो है वो वैलिड है, ये वाला ऑफर जो है ये भी वैलिड है. ओके 500 रुपीज वाला ऑफर, लेकिन ये यहाँ पर ना देर आर टू ऑफर्स, देर इज नो एक्सेप्टेंस. Okay we can say that it is a counter offer, there is no acceptance here. Okay so there is one case law regarding this. We'll see that case law. Okay, there was one case law, Neil versus Merritt. Okay, this is the case law. Okay, तो एम ने क्या कर दिया, मेरिट ने उसने ऑफर कर दिया अपने लैंड को सेल करने के लिए. ओके लैंड वाज फॉर सेल. ओके फॉर 280 पाउंड्स. ओके फॉर 280 पाउंड्स ही ऑफर टू सेल हिज लैंड टू हिम, टू एन. एन कौन है? नेल. ओके तो एन ने क्या कर दिया, उसको रिप्लाई कर दिया कि आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर. ओके उसने लेटर लिख के क्या बोला कि मैं 280 पाउंड्स दूंगा, लेकिन उसमें उसने चेक रख दिया ओनली फॉर 80 पाउंड्स. ओके और 200 पाउंड्स जो है दैट बैलेंस आई विल पे इन 50 50 50 ऐसा करके 4 इंस्टॉलमेंट में मैं पे कर दूंगा, ऐसा उसने बोला. ओके सो दिस वाज व्हाट दिस इज व्हाट इज दिस एक्सेप्टेंस इज कंडीशनल. ठीक है तो ये कोर्ट में गए. ओके इसने बोला मैं नहीं बेचूंगा, ऐसा तो मैं नहीं बेचूंगा बिकॉज आई नीड मनी और आई नीड ऑल द 280 पाउंड्स राइट नाउ. ओके मेरिट ने बोला. तो ये लोग दोनों कोर्ट पहुंच गए. ओके कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ कि this was not a valid acceptance. Judge said that it was concluded in the court that it was not a valid acceptance. Okay conditional नहीं हो सकता है acceptance, right? One more example is यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल. ओके इसमें भी ऐसा था. ओके कि ए ऑफर्स हिज टू सेल हिज हाउस टू बी. ओके फॉर 30 lakhs. ओके दिस इज ए, दिस इज बी. ओके ए ने बोला कि मैं अपने घर को 30 लाख में बेच दूंगा. ओके देन बी विल से दैट 2,40,000 सॉरी 24 lakhs आई गिव फॉर दिस. ओके बी ने बोला कि 24 lakhs आई गिव, आई कैन नॉट गिव 30 lakhs. ओके ये तो वही वाली बात हो गई ना जो हमने शॉपिंग का एग्जांपल लिया था, सेम थिंग इट इज, राइट? तो वी गेव हिम अनदर प्राइस. ओके दिस इज कॉल्ड एज नेगोशिएशन. यहाँ पर थोड़े एक्सेप्टेंस है. ओके देर इज नो एक्सेप्टेंस, right? There is no acceptance. Then A said that no, I will not accept your 24 lakhs. So hence he took back the offer. Okay उसने क्या कर दिया, अभी ऑफर चलो ऑफर मेरा कैंसिल हो गया. ओके आई विल नॉट ऑफर यू एनी मोर. देन बी ने बोला कि अच्छा ये तो मतलब डील हाथ से निकल के जा रहा है, राइट? सो ही वांटेड दैट लैंड, सॉरी दैट हाउस, राइट? तो उसने बोला कि अभी मैं 30 लाख देने को तैयार हूँ. ओके ही चेंज्ड हिज माइंड एंड ही सेड आई विल गिव यू 30 लाख.
Okay, so now this 30 lakh what he is giving to A, okay, this is not acceptance. Okay, उसने जो reply दिया, this is not acceptance because A ने पहले offer दिया था 30 लाख का, okay, B को, तो B ने क्या कर दिया, 24 लाख में उसने काउंटर ऑफर कर दिया, ओके, कंडीशनल एक्सेप्टेंस या फिर काउंटर ऑफर कर दिया। तो क्या ए ने क्या बोला कि मैं ऑफर ही कैंसिल कर दूंगा, ओके, उसने ऑफर कैंसिल कर दिया। बी फिर जाके ही इज अगेन सेइंग दैट आई विल बाय इट फॉर 30 lakhs itself. Okay, this is not acceptance. Okay, because there is no offer, because offer is already rejected by Mr. A. तो ये जब A and B went to court, it was held that it was held that Mr. A is not bound to sell his house to Mr. B. Okay, Mr. B ने बोला अभी तो मैं मान रहा हूँ 30 लाख में देने लेने के लिए. So what is your issue? You sell it to me at 30 lakhs. But A was not agreeing. Okay, so that was what upheld in the court also, that Mr. A is not bound to sell his house to Mr. B. Okay, then but conditions का मतलब ये नहीं कि some things are requirements. Okay, conditional is different and requirements is different. Okay, so we will see that with the example. Okay, so same example, like A is inquiring from B. Okay, so he's saying that will you buy my car for 2 lakh rupees. Okay, A is asking Mr. B, will you buy my car for 2 lakh rupees. Then B is saying that मैं 2 लाख में तो ले लूंगा आपका कार, but you have to take my bike for 50,000. Okay, this is like exchange वाला. Okay, exchange में मेरा बाइक ले लो 50,000 में, so that I can get your car for 1,50,000, like that. Okay, 50,000 का ये set off कर दीजिए ये बाइक लेके. Okay, that is what Mr. B said. Okay, this was what, again it was a negotiation kind of thing. It was not the acceptance, it was counter offer या फिर conditional acceptance बोल सकते हैं. Okay, it is not at all acceptance. Okay, it is counter offer. Okay, then बी ने क्या कर दिया, इसको दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस. ओके, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. ओके, दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस. देन ए ने मना कर दिया, आई विल नॉट सेल, ही सेड. ओके, बट इफ ऑन द अदर हैंड, ओके, सो इसने ना सपोज इसने 2 लाख में खरीदने को मतलब हाँ बोल दिया. ओके, फर्स्ट ए सेड टू बी, ओके, आई विल सेल माई कार फॉर 2 lakhs टू यू. ओके, देन बी विल से यस आई विल बाय इट. ओके, बट आई हैव टू गेट वाटर, उसका मुझे आरसी चाहिए. देन जो भी आरसी या फिर बुक चाहिए, राइट, वैलिड चाहिए, ये वाला वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए. ओके, दैट इज व्हाट बी सेड. ओके, तो ये क्या कंडीशन है क्या? विल वी से दैट बिकॉज दिस इज अ कंडीशन, वी विल से दैट कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, तो मिस्टर ए बोलेगा अभी ने बेचना है मुझे. ओके, आई विल नॉट सेल इट टू यू नाउ. Okay, I cannot give you all registration certificate and all that. It doesn't make sense, right? So this is a requirement. See, RC book वगैरह तो requirement है sale का. Okay, so it is a requirement kind of. So it is not a condition. Okay, so this is because expecting a valid title for the car is not a condition. Okay, it is not a condition. Okay, it is unconditional acceptance. So there is a contract. ओके, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है. लेकिन ऑन द अदर हैंड वेयर ही सेड दैट मोटर बाइक को 50,000 में ले लेना, दिस वाज नॉट एन एक्सेप्टेंस, नो कॉन्ट्रैक्ट. ओके, लाइक दैट. ओके, okay, all the text of these case laws that we discussed is here. Okay, this Merit and Nail versus Merit, Union of India versus Bahulal, and then this 2 lakh wala car wala example. Okay, all this you can read. Okay, then yes, acceptance must be communicated. Okay, we had seen the same point in offer also. Anything which should be communicated, offer or acceptance. Offer also should be communicated. ऐसा एक case law भी हमने देखा था. क्या था case law? Try to remember what was that. It was Gauri Dutt versus Lalman वाला case law. Okay, so we'll see acceptance में कौन सा case law आएगा. Okay, so there is one case law, Brogden versus Metropolitan Railway. Okay, here what happened, ये जो मेट्रोपॉलिटन रेलवे है,
इनका एक सप्लायर था कोल का, ओके, कोल सप्लायर दे हैड, ओके, दे मेड अ ड्राफ्ट अग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ कोल, ओके, फ्रॉम मिस्टर बी हु इज द सप्लायर, ओके। तो जो सप्लायर था, सप्लायर ने अब अग्रीमेंट बना लिया, ओके, दे हैड सम डिस्कशन अबाउट द सप्लाई ऑफ कोल एंड ऑल दैट, एंड देन व्हाट हैपेंड, ही मेड अ ड्राफ्ट अग्रीमेंट, उस वो किसको किसको देना था वो अग्रीमेंट, टू द मैनेजर ऑफ रेलवे, ओके, दैट इज मेट्रोपॉलिटन रेलवे, फॉर हिज एक्सेप्टेंस, उसको भेजना था, ओके, ही हैड टू सेंड इट, ओके। देन व्हाट हैपेंड, ही सेंड टू मैनेजर, ओके, जो सप्लायर था बी, सप्लायर ही इज, ओके, ही सेंड टू मैनेजर ऑफ रेलवे, ओके। देन दिस ड्राफ्ट वाज साइंड बाय द मैनेजर, ओके, उसने रख दिया अप्रूव्ड, ओके, अप्रूव करने के बाद उसने क्या कर दिया, उसने अपने मतलब अप्रूव का मतलब क्या हो गया, अभी एक्सेप्टेंस हो गया, राइट, बट उसने क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस को, अपने अप्रूवल अप्रूव्ड अग्रीमेंट को उसने कहाँ रख दिया, अपने कबर्ड में, ओके, ही केप्ट इट इन हिज कबर्ड एंड देन ही फॉरगॉट अबाउट इट, ओके। देन ही हैड थॉट दैट थोड़ा लीगल हेल्प लेके, सॉलिसिटर्स का हेल्प लेके, आई विल मेक अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस, दैट्स व्हाट ही थॉट, एंड देन ही हैड केप्ट इट इन हिज ड्रॉर, बट क्या हो गया कि वो उसने भेजा ही नहीं, ओके, उसके लीगल एडवाइजर्स को भेजा ही नहीं, देन व्हाट हैपेंड, इट वाज रिमेनिंग इन द ड्रॉर फॉर द later time also. Then what happened, it was held that in the court of law, it was held that there was no communication of the acceptance, okay, no communication of acceptance, hence there was no contract, okay. So communication अगर नहीं रहा acceptance का, तो वो contract ही नहीं है, that was what was held in the court of law, okay? Then one more such example is, A ने क्या किया, B को प्रपोज किया, ओके, आई वॉन्ट टू मैरी यू करके, ओके, विल यू मैरी मी करके इसने प्रपोज कर दिया, ओके, बी ने क्या कर दिया, ए के सिस्टर को बता दिया, उसको शर्म आ रहा था ए को बोलने के लिए, तो दैट्स व्हाई शी सेड टू ए सिस्टर दैट आई अग्री टू मैरी ए, ऐसा बोल दिया, लेकिन ये सिस्टर जो थी ना, बहन, ओके, बहन ना इसने अपने भाई को बताया नहीं, ओके, ए को बताया नहीं कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके, हियर ऑल्सो देर वॉज नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, okay, we are talking about communication of acceptance, okay, so there was acceptance but the acceptance was not communicated, hence there was no contract, right? Yes. Then there was another case law, okay, Hayworth versus Knight karke, okay, so this is your homework, okay, do it in your homework. Okay. Then yes, acceptance must be in prescribed mode, मतलब व्हाट्सएप भेजना है या फिर ईमेल भेजना है, ओके, हाउ, लाइक कॉल पे बोलना है, एक्सेप्टेंस कैसे बताना है, ओके, लेटर भेजना है, व्हाट टू डू, विच इज करेक्ट, right? So whatever, see, if someone offers, okay, and in the offer itself they say that this should be your mode of reply, okay, so जैसे कि जॉब ऑफर में हो सकता है, जॉब ऑफर, दे आर सेंडिंग अ जॉब ऑफर एंड देन दे आस्क द कैंडिडेट टू रिप्लाई विद अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द ईमेल, और इन सम हार्ड कॉपी में भेज दो, लेटर भेजना पड़ेगा, दे विल प्रिस्क्राइब द मोड, ओके, ऐसा बोल देंगे कि इसी मोड में भेजना है, ओके, देन दैट इज हाउ दे हैव टू एक्सेप्ट इट, okay, otherwise the acceptance is not valid, okay, so we are talking about the points which make the acceptance valid, right? तो अगर प्रपोजल में लिखा है तो उसी तरह उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ओके, अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज इट शुड बी इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर, ओके, रीजनेबल मैनर में उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, okay. Then what about time for acceptance, okay, so if there is a time limit, just a second, one
Okay, sorry. Okay, so what is the time limit for acceptance? Again, if it is specified in the proposal, offer में बता दिया है, okay, कि 4 दिन में रिप्लाई देना है, okay, 4 days, then it has to be accepted within that 4 days, okay. Otherwise, what if it is not specified, then within reasonable time, okay. Reasonable का मतलब कहीं पर लिखा नहीं है law में, okay. We'll have to think about the circumstances and facts and decide the reasonable time, okay. There's one example for this, okay. So there's a banana vendor, okay. He is selling bananas, okay. So this guy will say give a offer to Mr. B, okay, saying that I offer to sell 50 kg of bananas for 500 rupees. Okay, उसने बोल दिया, okay. तो इसने ना क्या कर दिया, मिस्टर बी ने 4 दिन वो चुप था, okay, 1 2 3 4, then क्या what happened, bananas got spoiled and rotten, okay, they were rotten, okay. Then उसने बोला I accept, मिस्टर बी ने बोला I accept, okay. पहले तो ये मिस्टर ए ने जब बनाना ऑफर किया था, okay, when he had made the offer to sell bananas, okay, so he had not given the time limit. क्या उसने कुछ टाइम बताया था क्या, नहीं बताया था, okay, but he had to, Mr. B had to respond in a reasonable time, okay. तो इस बनाना के केस में 4 days is not a reasonable time, okay, like that. Suppose this was same thing was there, okay, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक घर खरीदने का हाउस सेल करने का ऑफर दिया था, okay, for 20 lakhs, okay. So if B had accepted after 4 days, okay, then it is said to be 4 days is a reasonable time in this case, okay. 4 दिन में कुछ चेंज नहीं होगा घर पे, right, घर का कुछ चेंज नहीं होगा, right. 4 days is a reasonable time, it is a very small time, it's okay for for selling of a house. 4 days is still reasonable, so it is like that. So time limit हमेशा हमको facts and circumstances देख के decide करना पड़ेगा, okay. Then साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ओके. वी हैड सीन इन केस ऑफ ऑफर कि ऑफर में ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि नो रेस्पॉन्स का मतलब एक्सेप्टेंस, ऐसा हमको लिखना ही नहीं चाहिए, राइट. सो दिस ऑफर इटसेल्फ इज नॉट वैलिड, ओके. Like that, in relation to, in from point of view of acceptance, we can say that whenever someone is silent, we cannot take it as acceptance, the other person cannot take it as acceptance. एक example है, okay, there is a case law of Feldhaus versus Bindley, okay, कैसे कैसे नाम रहते हैं, right, okay. इसमें क्या हुआ था, ये ये कौन है, ये सेकंड ना, दिस गाय हैज अ हाउस, हॉर्स सॉरी, इसका एक घोड़ा रहता है, ओके. ये घोड़ा इसके अंकल को बहुत पसंद आता है, ओके. ही सेड दैट मुझे अगर इफ यू डोंट से एनीथिंग, ओके, तो ये हॉर्स को मैं 30 पाउंड्स में खरीद लूंगा, ओके. आई विल बाई इट एट 30 पाउंड्स, ओके, इफ यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग. तो ये क्या रहा, ये रेस्पेक्ट की वजह से, ओके, डर की वजह से ही वॉज लाइक साइलेंट, ओके. ही डिडंट से यस, ही डिडंट से नो, नथिंग ही सेड, ओके. लेकिन उसने ऑक्शनियर को बता दिया, ओके. इसके फार्म में ऑक्शन चल रहा था, तो उसने ऑक्शनियर को बता दिया कि ये हॉर्स मत बेचना, कि भेजना बेचना, ओके. डोंट सेल दिस हॉर्स बिकॉज दिस हॉर्स हमारे अंकल ने ऑलरेडी रिजर्व कर दिया है, तो इसलिए इस हॉर्स को मत बेचो, ओके. तो इसने क्या कर दिया, गलती से इस ऑक्शनियर ने, इसके चेहरे से पता चल रहा है कि वो गलती किया उसने, राइट. तो इसने गलती से ये घोड़ा बेच दिया, ओके. ही सोल्ड दिस हॉर्स, ओके, टू समवन एल्स, ओके. तो अंकल आ गया, ठीक है, अंकल आ गया इसके पास, बोला कि व्हाई डिड यू सेल दिस हॉर्स व्हेन आई हैड ऑलरेडी रिजर्व्ड इट फ्रॉम यू. तो इसने बोला मैंने तो हाँ भी नहीं बोला था, ना भी नहीं बोला था, राइट, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था. तो कोर्ट में भी यही डिसीजन लिया गया कि देयर वाज नो एक्सेप्टेंस, okay, there was no acceptance, hence no contract, hence there is no legal obligation for this guy, okay. That was the case law of horse, okay. That was फेल्टहाउस वर्सेस बिंडली. बिंडली जो था वो नेफ्यू था, फेल्टहाउस जो था वो अंकल था, ओके. सो नेक्स्ट, ओके. सो साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, बट लेकिन एक्सेप्टेंस ऑल्सो कैन बी, जैसे हमने बोला था कि ऑफर कैन बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, एक्सेप्टेंस ऑल्सो कैन बी
by words, expressed with the help of words, and also it can be with the help of conduct. लेकिन silence नहीं होगा. Okay, silence is not acceptance. Okay, what is conduct का acceptance by conduct? Okay, for example, okay, एक YouTube का सब्सक्रिप्शन आता है. Okay, YouTube का सब्सक्रिप्शन आता है, आपको पता होगा, राइट? फर्स्ट मंथ फ्री ऐसा करके वो लोग देते हैं, राइट? Then they'll ask you all the payment details and all that, right? Then they'll say that, after 1 month, if you don't, stop this subscription, we will, take this much, like, 60 rupees, 70 rupees, कितना है, 600 rupees they'll take monthly from you, like that, right? So, तुमने क्या कर दिया? Okay, रमेश ने क्या कर दिया? Okay, रमेश ने क्या कर दिया, वाईट्यूब का देखा कि बहुत सारे ऐड आ रहे थे, तो उसने क्या कर लिया, उसने 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन ले लिया. ओके, देन ही गेव हिज ऑल पेमेंट डिटेल्स एंड एवरीथिंग, right? After 1 month also, he continued doing that. He continued using YouTube Premium wala, okay, subscription wala. Okay, so now they deducted, YTube people, they deducted money from his bank. Okay, so here you cannot say that silence is not acceptance. Okay, so when they had told Ramesh that this will be deducted monthly, subscription fees will be deducted after 1 month, they had already told. And when Ramesh used the YouTube after 1 month also, he is using YouTube, so it means that it is implied acceptance. Okay, it is implied acceptance. Okay, so here there is an example of weekly magazine. Okay, so it is similar to what I had told you about the YouTube example, subscription ka example. Okay, so same thing was held in the court that time, that the bill due had to be paid by him. Okay, so this you can read as homework. Okay, so that is what acceptance by conduct or implied acceptance it is. Okay, so what is the example for that? One more example would be, there is a offer. Okay, customer ka order aa gaya, and then this offer was given to this man. Okay, okay, so there is a offer given to this person. Okay, this guy is who, A and B. Okay, he sent an offer and then he gave goods. Okay, he did not say I accept the offer and all that, he didn't say. He just sent the goods. Okay, sending the goods. Okay, sending the goods is what? Implied acceptance. Okay, so by act also there is acceptance. Okay, so same thing, modes of acceptance. We saw that by act, by omission also. Omission मतलब कुछ ना करने की वजह से भी acceptance हमको पता चल सकता है. Okay, कुछ ना करना मतलब it is not silence, it is something else. I'll give you an example. Okay, for example, A offered B, okay, that if B doesn't go to court and stand as witness, okay, witness नहीं देगा कोर्ट में, तो उसको 50,000 मिलेंगे. Okay, then that date came. Okay, कोर्ट में जाने का दिन आ गया. Okay, then B गया क्या, नहीं गया. Okay, B didn't go. Okay, so A had to give that 50,000 rupees. Okay, because of B's omission to do something. Omission matlab not doing. Okay, so that is that example. Okay, so communication can be acceptance can be done. Acceptance can be communicated by act or by omission. Okay, then there was one conduct. By conduct also we discussed already. Okay, there is one example for that. Okay, this one. Okay, इसमें क्या हुआ कि there is a bank. Okay, इसके बैंक में एक लैंड था किसी किसी कस्टमर का, जो एनपी हो गया था. ओके, नॉन परफॉर्मिंग हो गया था, तो ये लैंड उनको बेचना था. ओके, दिस बैंक हैड टू सेल दिस लैंड. देन व्हाट दिस बैंक पीपल डिड, दे कॉल्ड अ मीटिंग. ओके, ये सब लोग ऐसे राउंड टेबल मीटिंग बैठे थे. ओके, सबने डिस्कस बहुत किया. तो उन्होंने बोला कि ये मिस्टर ए जो है ना, ये बहुत अमीर आदमी है. ओके, दिस इज वेरी रिच गाय. ओके, लेट्स सेल दिस लैंड टू हिम. ओके, उन्होंने क्या कर दिया, एक अग्रीमेंट बना के मिस्टर ए को सेल करेंगे करके उन्होंने अपने आप में, ओके, आपस में, बैंक स्टाफ ने आपस में रेजोल्यूशन पास कर लिया. एंड देन दे साइंड.
ओके, मिस्टर ए को तो कुछ पता ही नहीं था, राइट? ऐसा तो मतलब कोई भी किसी को भी कोई भी दे कैन सेल एनीथिंग लाइक दैट। तो सेंट्रल बैंक योटमल वर्सेस वेंकटेश का ये केस लॉ था, जिसमें बैंक का रेजोल्यूशन इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू मिस्टर ए। ही इज नॉट बाउंड बिकॉज ही वॉज नॉट कम्युनिकेटेड ओनली। ओके, ही वॉज नॉट गिवन ऑफर एक्सेप्टेंस, ऐसा कुछ है था ही नहीं यहाँ पर, राइट? सो दिस वॉज दैट काइंड ऑफ केस लॉ। ओके, देन okay, so that's all for today. Tomorrow we will continue with communication of acceptance. Okay, we had seen communication of offer earlier. Tomorrow we will revise whatever we have read till today, and then we will continue with communication of acceptance, and then एक आध topic रह जाएंगे, like revocation and all that we will do in the next class. Okay, thank you.